के लिए हो रहा है तो फिर उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कंसीडर किया जाता। अच्छा ओके, समझ रहे हैं? क्योंकि जो इलीगल टर्मिनोलॉजी जहां वर्ड हमने लिखा ना इलीगल, उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि इट हैज टू कोइंसाइड विद ऑफेंस, मतलब वहां पे शब्द होना चाहिए था ऑफेंस, लेकिन इलीगल एक्ट यूज हुआ है टर्म। अब इलीगल एक्ट डेफिनेटली सिविल रॉन्ग भी इलीगल है, एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट लॉ प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज इलीगल, ठीक। बट यहाँ पे इट हैज टू कोइंसाइड विद द टर्म ऑफेंस, तो अगर ऑफेंस का कोई कॉन्स्पिरेसी हो रहा है तो फिर वो पैरा 1 में फॉल करता है, ऐसा चलता है। अच्छा ठीक है, हाँ, क्लियर? परफेक्ट, मोस्ट वेलकम। ओके, यस, फेयर इनफ। हेलो हेलो हेलो, यशस्विनी, आपकी आवाज आ रही है? नहीं, कल भी हो रहा था। लेट मी सी। हेलो हेलो, यस यशस्विनी, बताओ। यस सर। सर मुझे इसमें पूछना है, जो एकांत कारावास के लिए दिया हुआ है कि अगर अपराध के लिए कुल कारावास की अवधि 6 महीने तक की है तो किसी भी स्थिति में 1 माह से अधिक का एकांत कारावास नहीं है। 73 में सर 6 माह से अधिक तथा 1 वर्ष तक सामान्य कारावास है तो 2 माह से अधिक। सर जो ये इसमें दिया हुआ है रोज 70 सेक्शन 74 में हम पढ़ते हैं, सेक्शन 74 में हमें समझ में नहीं आया कि अगर इसमें दिया हुआ है कि 3 माह से अधिक का नहीं है, मतलब सर जब 6 माह तक का है कठिन कारावास तो 3 माह से अधिक का कैसे हो गया, समझ नहीं आया। मतलब यदि कारावास की अवधि कुल कारावास की अवधि 3 माह से अधिक नहीं है, जबकि सर कुल कारावास की अवधि तो 6 माह तक की है, मतलब इसमें 6 माह से तक से का कारावास कैसे दिया जाएगा? टोटल कारावास है ना यशस्विनी, मैं आपका पॉइंट समझ गया। जो टोटल कारावास है अगर 0 से लेकर के 6 महीने तक का, उसमें 1 महीने तक का मतलब एकांत कारावास हो सकता है। सर ये तो आ गया, समझ में ये आ गया, लेकिन हम 74 में कह रहे हैं सर, 74 में सेक्शन 74 में 74 में क्या डाउट है? सेक्शन 74 में ये है सर, 74 में ये है कि 3 माह से अधिक नहीं है, जबकि आपने लिखा है ना 6 माह से अधिक तक का कारावास है, लेकिन 3 माह से अधिक का नहीं है, ये समझ नहीं आया। टोटल के लिए वो चीज एड्रेस की जाती है। ये सर टोटल वो समझ नहीं आया, टोटल अच्छा, आपने जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की क्लास हुई है उसको अटेंड किया? जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की मैंने क्लास ली थी वो आप अटेंड आपने की है क्या? डिस्कनेक्ट हो जा रहा है यार बार बार। यस सर। हेलो, यस सर, 3 माह से अधिक नहीं है, कुल कारावास है वो कुल कारावास कठोर वाला है या एकांत परिरोध वाला है? एकांत परिरोध वाला है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और सर जो 6 माह तक वाला था वो वाला कौन सा था, कठिन वाला या एकांत परिरोध वाला? वो कठिन कारावास है, मतलब ओवरऑल इम्प्रिजनमेंट जो है वो ये है, और जो 3 महीने वाला है ये कठोर कारावास है, यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसकी बात हो रही है यहाँ। और सर जो 6 महीने का है वो? जो 6 महीने वाला है वो इम्प्रिजनमेंट, जो 6 महीने का है वो रेगुलर कारावास की बात हो रही है। हाँ, 6 महीने तक का है जिसके लिए 0 से 6 मंथ्स, यशस्विनी ऐसे समझ लो, कोई बात नहीं। जो 0 से 6 मंथ्स, 6 मंथ से 1 ईयर, 1 ईयर से अपवर्ड है वो आपका रेगुलर कारावास है, ठीक है। 0 से 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स से लेकर 1 साल तक, और 1 साल से अधिक, ये आप लोगों का रेगुलर कारावास होता है। रेगुलर मतलब रेगुलर कठिन वाला सर, कठिन वाला। हाँ, मतलब जो आपका वो है क्या बोलते हैं रेगुलर कठिन कारावास। हाँ, ये वो। और जो आप लोगों का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसका ड्यूरेशन 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब जो एकांत में किया जाता है ना एकदम एक कमरे में, वो 3 महीने से ज्यादा किसी भी हालत में टोटल से ज्यादा टोटल उसका 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब किसी व्यक्ति को कितने भी समय का कारावास हो। सर फिर 74 वाला और समझा दीजिए, उसमें लिखा है कि 3 माह से अधिक नहीं है, मतलब जब 6 महीने तक का है तो सर 3 माह तक का क्यों देगा कुल कारावास की अवधि? कुल कारावास ऐसे होता है यशस्विनी, आपको क्लास देखी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाली क्लास आपने अटेंड की है जो मैंने क्लास ली थी? हैव यू अटेंडेड दोस लेक्चर्स? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैंने क्लास में बताया, वो आपकी क्लासेस अटेंड की है? यशस्विनी आपकी आवाज आ रही है, आप आना तो बोलो। आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, हेलो 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 यशस्विनी, आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाली क्लासेस अटेंड की है क्या? मैंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की क्लास में ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये 2 क्लासेस में समझाया है। यस सर, हमने देखी थी वो। हाँ, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। यस सर, हमने वो देखी है, मतलब उसमें ही सही समझा था। बस उसमें हमें ये समझ नहीं आया कि 3 माह से अधिक का नहीं है कुल कारावास की अवधि, तो वो कठिन वाला है या एकांत परिरोध वाला है? एकांत परिरोध है वो एकांत परिरोध। तो सर 3 माह से अधिक नहीं है तो सर एकांत कारावास 14 दिन से अधिक नहीं है, तो उसमें अंतराल कैसे है सर, जब हम 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा का नहीं दे सकते? सर वो समझ नहीं आया, वो बता दीजिए। वो ना तो मैंने क्लास चलो ठीक है, मैं अभी समझा दूँ, एक बार शॉर्ट में फिर से समझो, ठीक है यशस्विनी, समझा दूँ? आवाज नहीं आ रही है शायद यशस्विनी को, मैं समझा देता हूँ बेटे, 1 मिनट सुन लो, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलो अभी समझ। सर वॉइस नहीं आ रही। देखो कोई बात, देखो यहाँ पे आराम से समझना, यशस्विनी एंड एवरीवन, अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा हो
सॉलिटरी कंफाइनमेंट कभी भी टोटल 3 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को कितने भी समय का इम्प्रिजनमेंट हुआ हो, सॉलिटरी कंफाइनमेंट या एकांत परिरोध कारावास जैसा यशस्विनी ने कहा, वो कभी भी 3 महीने से ज्यादा का टोटल नहीं हो सकता। टोटल होने का मतलब है, मान लो अगर किसी व्यक्ति को किसी एक महीने में 2 दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट या एकांत परिरोध कारावास हुआ, फिर दूसरे महीने में उस व्यक्ति को 6 दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट हो गया, फिर किसी व्यक्ति को तीसरे महीने में 5 दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट हो गया, तो कभी भी इसका जो जोड़ है वो कभी भी, चाहे कितना भी बड़ा कारावास हो, इसका जोड़ कभी भी 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट इज द रूल ऑफ इट। ठीक, तो अगर 0 से लेकर 6 महीने तक किसी व्यक्ति को कारावास हुआ है, तो इन टोटल 1 महीने, अब जोड़ लो आप, मान लो कि किसी व्यक्ति को पहले महीने में 5 दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट हुआ, एकांत परिरोध हुआ, फिर अगले महीने 4 दिन का एकांत परिरोध हुआ, अगले महीने 6 दिन का परिरोध हुआ, अगले महीने 2 दिन का परिरोध हुआ। अब ये आप जोड़ते जाओ, इसका टोटल 6 महीने में कभी भी 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 30 दिन से ज्यादा ये टोटल नहीं जाएगा। ये रूल है। अब अगर ये 6 महीने से ज्यादा है और 1 साल से कम है, तो अगर इसमें आप जोड़ते जाओगे किसी महीने 5 दिन, किसी महीने 4 दिन, किसी महीने 2 दिन, तो इसका टोटल कभी भी 60 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी 2 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। अब 1 साल से बड़ी अगर पनिशमेंट है और आप मान लो कि 5 साल की पनिशमेंट है, 10 साल की पनिशमेंट है, अब अगर आप उस व्यक्ति को, ठीक है, अब अगर आप उस व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आप उस व्यक्ति को, ठीक है, पनिशमेंट दोगे सॉलिटरी कंफाइनमेंट का, किसी महीने 1 दिन दे दिया, किसी महीने 7 दिन दे दिया, किसी महीने 2 दिन दे दिया, कितना भी करोगे, इनका कभी भी टोटल 90 दिन से ज्यादा, यानी कि 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा। ये रूल है। तो ये जो 3 महीने वाली बात हो रही है ना यशस्विनी एंड एवरीवन, ये एकांत परिरोध कारावास की बात हो रही है। और 1 महीने में कैसे वर्कआउट करता है ये, इसका मैंने आपको पैरामीटर सिखाया है, जो मेरी सॉलिटरी कंफाइनमेंट वाली क्लास है उसमें मैंने ये चीज बहुत डिटेल में समझाई। ठीक, रुक जाए। ठीक, वो मैंने शुरू में जब आप लोग को मैंने सॉलिटरी कंफाइनमेंट पढ़ाया था, मैंने वो चीज तभी समझाई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आपको पनिशमेंट देनी है सॉलिटरी कंफाइनमेंट की, तो कभी भी वो एक स्ट्रेच में 14 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, और 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, और जितने भी दिन का आप व्यक्ति को सॉलिटरी कंफाइनमेंट दोगे, आपको अगले सॉलिटरी कंफाइनमेंट में उतने ही दिन का गैप देना पड़ेगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ डेज का गैप होगा, सेम नंबर ऑफ डेज का उस व्यक्ति को विश्राम भी आपको देना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा। ठीक, अब पहला सवाल कि जब एक बार में 1 महीने में 7 ही दिन हो सकते हैं, तो 14 दिन कैसे दे दोगे आप एक स्ट्रेच में? एक स्ट्रेच में ऐसे हो सकता है कि 1 महीने की आखिरी 7 दिन आपने 7 दिन कर दिए, ठीक, सॉलिटरी कंफाइनमेंट, और अगले महीने के पहले 7 दिन आपने कर दिए, तो ये एक बार में 14 दिन हो गया। लेकिन शर्त फिर ये है कि आप उस पूरे महीने में, 8 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, उस महीने में आप उस व्यक्ति को कोई दूसरी सलाह, कोई दूसरी सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं दे सकते। अंडा सेल यही होता है। ठीक, दूसरा आप उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं दे सकते, सिंपल एज दैट। आपको अगर कम देना है, यहाँ पे आप 2 दिन भी दे सकते हो, 1 दिन भी दे सकते हो, 7 दिन तक कुछ भी दे सकते हो। ठीक, लेकिन एक बार में 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं, और किसी भी हालत में एक स्ट्रेच में 14 दिन से ज्यादा नहीं। मतलब आप ये 7 दिन के बाद 1 दिन दे दो, 2 दिन दे दो, 3 दिन दे दो, ऐसे करके 7 दिन तक दे दो, लेकिन 8 दिन नहीं दे सकते, क्योंकि वो टोटल 15 दिन हो जाएगा, दैट इज इलीगल। ठीक, ये पॉइंट है बच्चा। ओके, और कभी भी ध्यान से समझना, सॉलिटरी कंफाइनमेंट कभी भी, एकांत परिरोध कभी भी इन टोटल 3 महीने से ज्यादा का हो ही नहीं सकता, वो इलीगल माना जाएगा। सिंपल। अब आप किसी व्यक्ति को 1 महीने में 7 दिन दे दो, फिर अगले महीने 2 दिन दे दो, फिर अगले महीने 4 दिन दे दो, फिर ये जोड़ते जाओ, ये कभी भी 3 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं होगा, 90 डेज से ज्यादा का नहीं होगा। ठीक, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। ओके, चल आगे समझ, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, जिन लोगों को डाउट भी रहा होगा वो भी ये समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू में ज्यादा आता है, हाँ, ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, एग्जैक्टली। तो ये कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, 73 74 दो नहीं हो गया। चलिए, तो आज हम लोग को नोट मेकिंग करनी है अराउंड सेक्शन नंबर, नोट मेकिंग इज टू बी डन अराउंड सेक्शन नंबर 299 एंड सेक्शन 300। ठीक, 299 और 300 के अराउंड आज हम लोग को नोट मेकिंग करनी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तगड़ी नोट मेकिंग करनी है, सिंपल भाषा में बोले तो आज मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के एड्रेस हो जाएंगे जब हम आज की नोट मेकिंग करेंगे। चलो पक्का, ज्यादा स्पीड नहीं रखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल स्पीड रहेगी। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा कि इस पूरे के पूरे सेशन से आपके कितने क्वेश्चंस एड्रेस होंगे। आज जितनी भी चीजें मैं लिखवाऊंगा उनको आप कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सबसे पहला जो आपका एक क्वेश्चन एड्रेस होता है, जिसको जब हम आज नोट मेकिंग करेंगे तो वो पॉइंट एड्रेस हो जाएगा, दैट इज व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड। व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड, नंबर 1। ठीक, इसका डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट एंड इसके एक्सप्लेनेशंस। एक क्वेश्चन जो आज हम लोग एड्रेस करने वाले हैं वो ये। दूसरा क्वेश्चन जो आज एड्रेस होगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट एग्जैक्टली, ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ 299(1) when there is 301। ठीक, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, हाउ टू आंसर a question based on facts
relating to culpable homicide. So culpable homicide के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप कैसे एड्रेस करने वाले हो, ये यहाँ पे चीज आएगी. इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4, यस, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच का डिफरेंस, इस पे भी आप लोग आज नोट मेकिंग करने वाले हो. ठीक, सो काफी ज्यादा एग्जॉस्टिव नोट मेकिंग होगी और जो भी नोट मेकिंग हम लोग करेंगे वो इन क्वेश्चंस को आंसर करेगा. साथ साथ में हमें केस लॉस भी बहुत सारे लिखने होंगे, तो इसलिए बहुत सजग होके नोट मेकिंग करिएगा, इधर उधर भटकना मत. चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. फेयर एनफ देन. हेडिंग बना लीजिए, कल्पेबल होमिसाइड. कल्पेबल होमिसाइड. यस प्रज्ञा, अनुभूति का कोई डाउट शायद कहीं पे निकल गया है. अनुभूति, कैन यू प्लीज रीपोस्ट योर डाउट? अपना डाउट दोबारा भेज सकते हैं. मारी, आप भी भेज दीजिए. चलिए लिख लीजिए. राइट दिस डाउन. Culpable homicide is considered to be the first kind of unlawful homicide. Is considered to be the first kind of unlawful homicide before murder. Full stop. It is causing of death. It is causing of death by doing number 1, yeah, A, by doing an act with an intention to cause death. An act with an intention to cause death. ब्रैकेट में लिखिएगा डायरेक्ट. उसके आगे ब्रैकेट में लिखिए ड्राउनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, पॉइजनिंग. When culpable homicide turns into murder. हाँ, अच्छा प्लान है. When CH turns into murder. Thank you, Maria. Clause B. An act with the intention of causing such bodily injury. An act with an intention to cause such bodily injury as is likely to cause death. As is likely to cause death. इनडायरेक्ट लिख लेना आगे ब्रैकेट में. C. An act with the knowledge that it is likely to cause death. इसके नीचे ब्रैकेट में लिखिएगा lack of intention. सबसे पहले लिखें नेक्स्ट पॉइंट में, अंडर दिस डेफिनेशन डेथ मीन्स, नहीं डी पॉइंट नहीं अलग है. अंडर दिस डेफिनेशन, नेक्स्ट पैरा, डेथ मीन्स अ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. As per the case of Aruna Ramchandra Shanbog versus Union of India, 2011. Death occurs when the brain dies completely. Death occurs when the brain dies completely. Full stop. A person cannot be said to be dead
a person cannot be said to be dead unless the brain stops all its activities. Unless the brain stops all its activities. Next लिख लें. Next point. Death can even be caused unless the brain stops all its activities. Raksha. Full stop. Death can even be caused. Death can even be caused by use of words. By use of words. नहीं अलग है. Death can even be caused by use of words and by drowning. And by drowning. ड्राउनिंग के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा शांति भाई वाघेला. शांति भाई वाघेला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2013. In the case of, next line, in the case of Pashupati Singh, in the case of Pashupati Singh, 1973 का केस है. It was held that where bodily injury is sufficient to cause death, it was held that where bodily injury is sufficient to cause death is actually caused, it is immaterial to go into the question. It is immaterial to go into the question as to whether the accused had the intention to cause death, whether the accused had the intention to cause death, or the knowledge that the act will cause death. That the act will cause death. इसका मतलब यही है कि कोई व्यक्ति अगर मॉर्टल वुंड दे रहा है, ठीक, तो उसका इंटेंशन, उसकी नॉलेज, ये सब मैटर नहीं करती. ठीक, आगे लिख लें. नेक्स्ट एक केस है, दैट इज केसर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पे. नेक्स्ट केस इज केसर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. This case addresses the point, मतलब ब्रैकेट में, तो मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूं, ब्रैकेट में लिखिएगा difference between intention and knowledge. Difference between intention and knowledge. इसमें लिख लें 2008 का है साक्ष्य, 2008. Knowledge denotes a bare state of consciousness, wherein there is awareness of certain facts in which the human mind might itself remain inactive, whereas intention connotes human mind remains inactive, whereas intention connotes a conscious state. Intention connotes a conscious state in which mental faculties
are roused to, connotes का मतलब meaning. Mental faculties are roused into activity. Roused into मतलब active हो जाती. Stimulus चालू होना, engine चालू होता है ना, roused into activities. So mental faculties are roused into activities and summed up, double M, summed up into action for the deliberate purpose of being, directed towards a particular and specific end. Directed towards a particular and specific end. Full stop. Intention need not necessarily involve premeditation, full stop. Whether there is an intention or not, is a question of fact. स्टार बना करके एक पॉइंट लिखिएगा. As in the case of section 80, a death caused without requisite intention, or knowledge, it will not be considered as culpable homicide. अब यहां पे एक केस लिख लें. In the famous case of Palani Gondan, नहीं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट उसके नीचे, क्योंकि इंटेंशन नॉलेज की बात हो रही है तो उसी के नीचे. In the famous case of Palani Gondan, मुझे फैक्ट्स लिखवाने की तो जरूरत नहीं है. मतलब do I need to dictate the facts? यार Palani Gondan है, come on. It will be a waste of time. जहां मुझे फैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी मैं फैक्ट्स भी लिखवाऊंगा, बट Palani Gondan is like mother of all wrongful cases, तो वो तो पता है आपको उसके फैक्ट. सो लिख लीजिए. In the case of Palani Gondan, the court decided that there was no requisite. In the famous case of Palani Gondan, the court decided that there was a lack of necessary intent or knowledge to cause death. Necessary लिखो, requisite लिखो, एक ही बात. ठीक है, required उसका मीनिंग होता है, necessary भी सही. There is lack of requisite intention या lack of necessary intent or knowledge to cause death, and thereby convicted the accused, for grievous hurt. But in the case of R versus Cheshire, but in the English case of R versus Cheshire, ये 1919 का केस है और ये 1991 का केस है. The courts have held that
concealing the fact of offense, concealing the fact of offense undoubtedly shows the requisite knowledge, undoubtedly shows the requisite knowledge on the part of the offender, on the part of the offender. आगे लिख लें. In the case of Emperor versus Sri Narayan, in the case of Emperor versus Sri Narayan, which had similar facts, the court did not convict the accused under section 302 as there was lack of intention, but they were held liable under section 304, as they had acted with gross negligence, wherein the law imputes that the offender had necessary knowledge, आगे लिख लें. In the case of R versus Nedrick, it was held that the knowledge or foresight of the probable consequences of an act cannot take place, of a probable consequences of an act cannot take place of intention, कुछ ज्यादा ही स्लो है. मैं तो तेज लिखवा दूंगा क्योंकि बहुत कुछ लिखना है. शुड आई इंक्रीज द स्पीड? आप लोग बता दो. थोड़ी सी. ठीक है, पोल करवा लेते. शुड आई इंक्रीज द स्पीड? ट्रू मतलब यस, हाँ प्लीज कर दो, एंड फॉल्स मतलब नो. जो चल रहा है वैसे चलने दो, लिटिल बिट. अच्छा ठीक है, तुम जो चाहो वो सिलेक्ट कर लो. ठीक है, मैंने ट्रू सिलेक्ट किया. आई कैन इंक्रीज द स्पीड. मेरे को फायदा है, मैं स्पीड में बोलूंगा, मुझे फायदा है. लिख लो, बताओ मतलब ट्रू फॉल्स व्हाटएवर. आई कैन इंक्रीज द स्पीड. यस
मींस स्पीड बढ़ाओ पर धीरे धीरे। वाह 5347 वाह ठीक है। नो जैसा चल रहा है वैसा सही, स्पीड बढ़ाओ लेकिन धीरे धीरे। ठीक है चलिए लिख लीजिए, राइट दिस डाउन। क्वेश्चन इज, ये इंटरव्यू में मेंस में पूछा जाता है, लिख सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ culpable homicide not amounting to murder? What is the meaning of culpable homicide not amounting to murder? लिख लें, सबसे पहले एरो में लिखिएगा 299 is proved, 299 is proved but 300 is not proved. यानी elements of 299 are proved but 300 is not proved. or 299 is proved and corresponding clauses of 300 are also proved, but the act falls in one of the exceptions of section 300. One of the exceptions of section 300. इसके नीचे लिख लें, herein the punishment is provided under section 304. Herein the punishment is provided under section 304. Thank you so much भव्या, I hope किसी ने ये ना देखा हो। Thank you so much. Respect भव्या, respect. ठीक, मतलब मेरे बस में होता ना तो मैं थोड़ा सा डिस्काउंट अपनी तरफ से भी दे देता। जिनको पता उनको पता, बाकी लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, फोकस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिख लें, ये इंटरव्यू और मेंस दोनों में पूछा जाता है। मेंस एंड इंटरव्यूज में लिखिएगा मेंस एंड इंटरव्यू। नेक्स्ट लिख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस एंड इंटरव्यू, राइट दिस डाउन। देखा नहीं था बट डिफरेंस इन कलर से पता चल गया। काफी दिमाग लगाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भूमिका कलर चेंज करके क्यों लिखा पनिशमेंट के बाद? अरे ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो राइट दिस डाउन। इफ एवरी केस ऑफ 299, if every case of 299(1), अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां एक क्वेश्चन था, यहां एक क्वेश्चन है। If every case of section 299(1) amounts to 301, नुपुर अभी जस्ट काजल ने बताया बच्चे, is provided under section 304. नहीं काजल, अभी नुपुर ने बताया is provided under section 304. ठीक है, if every case of 299(1) amounts to 301, then what is the need of repetition under both the sections? What is the need of repetition under both the sections? लिख लीजिए। If such is not done, it would be a technical violation of. If such is not done, it would be a technical violation of section 300. It will be a technical violation of section 300 in order to adhere with the same. adhere with the same का मतलब अगर 300 को आपको जस्टिफाई करना है तो 299 का 1 रखना पड़ेगा, फुल स्टॉप। An absence of, इसी के नीचे लिखे जाएंगे, an absence of section 299(1) will violate the G
and species relationship between culpable homicide and murder will violate the genus and species relationship between culpable homicide and murder. आगे लिख लें. Next point. The punishment for culpable homicide is provided. The punishment for culpable homicide is provided under section 304 in two parts. Next line. Next line. The punishment for culpable homicide is provided. एक heading बना सकते हो इसके लिए punishment. The punishment for culpable homicide is provided under section 304 in two parts. For the purpose of para 1 section 304, two situations will apply. For the purpose of para 1 section 304, two situations will apply. Number 1, cases of 299(1) and 299(2) which did not amount to murder, which did not amount to murder. कोई मुझे बताएगा कि 299 का 1 मर्डर कैसे नहीं होगा, मतलब उसमें मर्डर की पनिशमेंट कब नहीं होगी 299 के 1 में. इट इज इक्विवेलेंट टू 300 का 1. तो मर्डर की पनिशमेंट कब नहीं होगी 299 के 1 के लिए? अभी बताया था, जस्ट अभी बताया. बस अगर 299 के 1 में भी फॉल कर रहा है तो जाहिर सी बात है 300 के 1 में भी फॉल करेगा. अगर 300 के 1 में भी फॉल कर रहा है बट एक्सेप्शन में चला गया तो फिर ये 304 पैरा 1 की कैटेगरी में आ जाएगा. सिंपल रूल. ठीक. सो केसेस ऑफ 299(1) and 299(2) which did not amount to murder, number 1. Number 2, case of 299 part 1 or part 2 case of 299 part 1 or part 2 holding a requisite intention, ब्रैकेट में एज एन अंडरलाइन करना, ब्रैकेट नहीं अंडरलाइन करना क्योंकि ये इंटेंशन बेस्ड है. पैरा 1, requisite intention to cause death, requisite intention to cause death is mandatory, is mandatory. आगे लिख लें. For the purpose of section 304 para 2, for the purpose of section 304 para 2, the coinciding section is, the coinciding substantive provision is section 299 clause 3, section 299 clause 3, wherein death is caused with the knowledge, wherein death is caused with the knowledge that the act is likely to cause death, with the knowledge that the act is likely to cause death. मतलब वही जो अपने एरो पॉइंटर्स बनाए थे बस उसी की बात यहां पे हो रही है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आगे लिख लीजिए. In the case of R versus Fox, नेक्स्ट पॉइंट है ये. अब अपन ने पनिशमेंट्स को एड्रेस कर दिया है, अब अपन एक्सप्लेनेशंस पे जा रहे हैं. एक्सप्लेनेशन 1, 2 and 3. In the case of R versus Fox, it was held that for the application of explanation 1, for the application of explanation 1, the elements of culpable homicide needs to be established first. The elements of culpable homicide needs to be established first. Thus, a requisite intent or knowledge has to be judged before
the matter is decided through explanation 1. Before the matter is decided through explanation 1. इसका मतलब ये है कि explanation 1 में accelerating death while a person is laboring under a pain or bodily infirmity वो तब माना जाएगा जब requisite intention या knowledge से कोई व्यक्ति ऐसा करे. अगर गलती से उससे ऐसा कुछ हो जाए तो फिर explanation 1 applicable उस पर नहीं होता. मतलब explanation 1, 2, 3 कुछ भी हो उसमें भी intention और knowledge applicable होगा. आगे लिख लीजिए. नेक्स्ट केस लिख लें. शत्रुघ्न लोहार वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा. शत्रुघ्न लोहार वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा. गाइस प्लीज प्रज्ञा की हेल्प कर दें. शत्रुघ्न लोहार वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1998 का केस है. एंड द कृष्णस्वामी केस. कृष्णस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है. इसमें लिख लीजिएगा 1947 का है, सॉरी 1965 का. इसमें लिख लें explanation 2 is explicit and gives no room for discussion. Explanation 2 is explicit and gives no room of discussion. Full stop. The reason for this provision is obvious. That it is not always possible that proper remedies and skillful treatment are within the reach of a wounded man. Are within the reach of a wounded man. आगे लिख लें. Remedies and skillful treatment are within the reach of a wounded man. ठीक. Explanation 3 में there is no such requirement. Next लिख लें. Next question is difference between culpable homicide and murder. कौन सा केस है भाई? सबसे पहले तो यही बता दो. Which is that case? कौन सा केस है जो culpable homicide murder के बीच का डिफरेंस बताता है? Yes. The case is that of R versus गोविंदा. ठीक है, इसके फैक्ट्स में हमें जाने की जरूरत नहीं. R वर्सेस गोविंदा जो है वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस बताता है. इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जो गोविंदा नाम के व्यक्ति थे इनको अल्टीमेटली जो सजा हुई थी वो कल्पेबल होमिसाइड की थी. ठीक, कभी कभी ऐसे गलती से भूले इसमें पूछ लेते हैं. ठीक, R वर्सेस गोविंदा, इसमें गोविंदा को कल्पेबल होमिसाइड के लिए लेबल किया था. एंड जो डिफरेंस था कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच का उसको इलैबोरेट करने का. R कौन होते हैं हमेशा? देखो, अगर उस टाइम पे राजा होते हैं तो R का मतलब होता है रेक्स. ठीक है, और अगर उस टाइम पे ब्रिटेन में इंग्लिश लॉ में अगर क्वीन होती है तो फिर नाम होता है रेजिना. ठीक, सो व्हेन वी राइट R का मतलब होता है रेक्स. ठीक, किंग, रेक्स वर्सेस दैट इज R वर्सेस. अगर उस टाइम पे किंग नहीं है, क्वीन है, जैसे अभी किंग है. ठीक, तो अभी जितने भी इंग्लिश केसेस होंगे उसमें R वर्सेस का मतलब R मतलब रेक्स होगा. ठीक, और इसके बाद मान लो कि कोई क्वीन आती है. ठीक, तो फिर वो R वर्सेस का मतलब R मतलब रेजिना होगा. दैट इज इट. ठीक, यही. ओके, चल आगे बढ़ते हैं. डिफरेंस बिटवीन, हाँ एम्परर लिखते हैं, कई बार एम्परर भी लिखते हैं. सो डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर आर वर्सेस गोविंदा केस में बताया गया था. साथ ही साथ इंडियन केस भी है, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया का केस है. दो केसेस में डिफरेंस को इलैबोरेट किया गया. नंबर 1 इज आर वर्सेस गोविंदा, नंबर 2 इज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया. 1977 का ये केस, इंडियन केस. लिख लें इसमें. Section 300 uses the words culpable homicide is murder if. Section 300 uses the word
कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ, इसके नीचे लिखेगा, ये अपन केस ही लिख रहे हैं, आर वर्सेस गोविंदा ही बता रहे हैं, और पुनः यही है. This explicitly suggests that in order to be a murder, culpable homicide has to be proved first. That is, it is only after proving culpable homicide. That is, it is only after proving culpable homicide that the elements of murder under section 300 shall be examined. Full stop. By implication in every clause of section 300, elements of murder under section 300 shall be examined. Full stop. By implication in every clause of section 300, there will be explicit or implied ingredients. By implication in every clause of section 300, there will be explicitly or impliedly ingredients of corresponding clauses of section 299. Full stop. नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चाहे तो हाईलाइट कीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा जैसे भी. The actus reus for both the offense being the same, the actus reus for both the offense being same, the basic difference lies in the degree of mens rea. The basic difference lies in the degree of mens rea. Full stop. Justice Melville in R versus Govinda, Justice Melville in the case of R versus Govinda, next line, this is the next line. In the case of R versus Govinda, had made an elaborate comparison between section 299 and 300. Had made an elaborate comparison between section 299 and 300. लिख ले इसी के नीचे. अब ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक, चाहे तो आप लोग 1 मिनट का ब्रेक ले ले, थोड़ी सांसें ले ले, टेक अ 1 मिनट ब्रेक आराम से, क्योंकि लिखना काफी, ठीक, उंगलियां चटका ले. यस, हैव सम फन. 1 मिनट में जितना अपने जीवन को जी सकते हो जी लो, क्योंकि बहुत कुछ लिखना है इधर पे, ठीक. यस सर, टी पी ले. हाँ बेटा, टी कॉफी जो भी पीना, शरबत पानी, ठीक है, रूह-अफ़ज़ा जो पीना आराम से पी, कोई दिक्कत नहीं. आप क्यों कर रहे हैं, तब तक आप रिपीट कर दें. अभी ऊपर किसी ने प्रज्ञा लिख दिया था किसी ने, शायद ऊपर ने लिखा था, ऊपर चेक करो, पॉइंट्स और टेबल, पैराग्राफ्स, ठीक, पॉइंट्स और टेबल, पैराग्राफ्स. ऐसा होता है ना कि दे आस्क्ड मी पिज़्ज़ा और बर्गर, आई सेड मैगी. ओके सर, काहे बात की खुन्नस निकाल रहे हैं हम लोगों से. तुम्हें जज बनना नहीं बनना है, जज बनना है ना, उस पर फोकस करो. काहे खुन्नस काहे निकालेंगे भैया, जहाँ नोट मेकिंग है वहाँ नोट मेकिंग है, कैसे बच जाओगे, कैसे ही बच जाइएगा. लिख तो हम रहे, तब तक आपको भी काम बता दिया प्रज्ञा ने. हाँ, तब तक प्रज्ञा इज लाइक कि भाई बाकी सब ठीक है, तब तक तुम रिपीट कर दो ना. सुनो, खाली बैठे हो 1 मिनट क्या ही करोगे, रिपीट कर दो, ठीक. बुलाओ यार, हमें कॉफी पसंद है, आई एम अ कॉफी गाय. कॉफी, चाय अच्छी होती है डेफिनेटली, लोग मरे मरे जाते हैं चाय के पीछे कि चाय पे जिंदा है, ठीक है. इंस्टाग्राम पे लोगों के स्टेटस होते हैं खाली चाय पे जिंदा है, ठीक. तो मैं कहता हूँ कि इनकी ऑक्सीजन छीन लो, फिर देखो चाय पे कितनी देर जिंदा रह पाते हैं, ठीक है. ऐसे जो लोग मिलते हैं ना, मेरे को सिर्फ चाय, नेवर से दैट. चाय अच्छी है, ठीक है, चाय अच्छी है, लेकिन बस, ठीक है, सिंपली आपको बता रहा हूँ कि चाय अपनी जगह होती है, लेकिन ये कहना है कि सिर्फ चाय पे जिंदा है, दैट इज एन ओवर एग्जैजरेशन. ये कभी जीवन में मत करो. इनसे ऑक्सीजन ले लो, फिर इनको बोलो कि वो जो चाय में पानी डाला ना, उसी में से H2O में से O2 निकाल ले. H2O में से O2 निकल नहीं सकता, सिर्फ एक एटम रहता है ऑक्सीजन का. अब यहाँ पे अपन थोड़ा थोड़ा, एक तो ऑलरेडी भेजा अड़ा हुआ है कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में, उसमें जो केमिस्ट्री आ रही है, ठीक,
दिस इज नॉट हेल्पिंग। ये हालात बिगाड़ ही रहा। ठीक, चलो, यस, आज सर का मूड अच्छा है, आज याद दिला सकते हैं। क्या याद दिलाना तुमको? सर का कोई ठीक नहीं है। अच्छा, पुलाव की क्या बता, मेरा मूड अच्छा रहता है यार, ऑर्डिनरली मेरा मूड ऐसे खराब नहीं रहता। तुम लोग फालतू में मुझे विलेन बना रहे हो, ठीक है? लोग फालतू में मेरे से डर रहे हैं, लोग फालतू में मेरे से घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या ये 22-24 सितंबर का क्या रोना मचा रखा है सब लोगों ने। ठीक, तुम लोग खुद बताओ, तुम लोग खुद सोचो कि मेरे से बात करके कभी किसी को लग सकता है कि मैं डांट सकता हूँ, मैं डांट सकता हूँ या डपट सकता हूँ? कभी कभी लगा तुम लोग को? 22-24 सितंबर को हटा दो, चलो इसको अपनी लाइफ से डिलीट कर, ठीक, बाकी तो सही रहता है ना? सर आप बड़े भैया जैसे लगते हैं, डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा एक काम करो कि वो मेरी बुक्स जो टेबल पे रखी हुई है, पहले तो उसको फटाफट से कवर्ड है उसमें जमा दो, ठीक है? फिर मेरे जो जूते हैं उनको प्रॉपर्ली अच्छे से पॉलिश कर दो, ठीक? यस, मम्मी ने मुझे बोला था बोतल में पानी भरने के लिए, तुम कर, चलो बढ़िया। इतना भाई बहन का रिश्ता बहुत था, कूलेस्ट पर्सन एवर, कतई बोले आप, धन्यवाद, यही सुनना चाह रहा था। हाँ सर, कार्तिक से पूछिए। अरे कार्तिक चिल है यार, तुम लोग फालतू में डरे डरे जा रहे हो। कार्तिक से बहुत बात करता हूँ, बहुत हमारी कॉन्वर्सेशन होती है 6-8 महीने में एक आधा बार। वी आर वेरी चिल अबाउट इट, इट्स ओके, चलता रहता है, फालतू डरते रहते। चलिए लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट। हाँ अब लिखते हैं। ये ये एक बच्चा ऐसा मुझे बहुत बहुत प्रिय है, बड़ा सही रहता है कि सर बाकी सब पढ़ाई करते हैं सर, जाने दीजिए। ये लोग अभी मजाक मजाक में कुछ बोल देंगे फालतू, आप तमा जाओगे, हमको डांटोगे फटकारोगे, 3 दिन की चपत लग जाएगी। अच्छा चलो, आई विल कंटिन्यू बट वन थिंग एंड देन वी विल कंटिन्यू। एक बात बताओ, जो 22 और 24 तारीख को मैंने पढ़ाया, क्या ऐसा हुआ कि आपको कुछ समझ नहीं आया? क्या ऐसा हुआ था कि आपको कुछ समझ ही ना आया हो कि क्या पढ़ा के चले गए? खुद बताओ। नहीं आया, डर में मुझे लगा तुम लोग बोलोगे नहीं नहीं सर, समझ में सर सब कुछ है, इससे क्या फर्क पड़ता है आपका मूड अच्छा हो खराब हो? हमें समझ में बिल्कुल सब कुछ समझ में है। घनी बेइज्जती कर दी, घनी ऊंची बात कर दी तूने अलाउद्दीन कि सर आपका मूड खराब था, जो भी पढ़ा रहे थे समझ ही नहीं आ रहा था। 22 और 24 अक्टूबर को वो 22 और 24 सितंबर वाली क्लास एक बार दोबारा अच्छे मूड से पढ़ा दोगे तो शायद समझ में आ जाना आपको, शायद, शायद नहीं शायद, ठीक है? चलो चलो चलो, नाउ राइट दिस डाउन, लिख लो, क्योंकि आज भी खत्म नहीं हो पाएगा कि बिलबिल अंकल ने क्या क्या लिखा है। चलो लिख लो। आया सर समझ में, बट दूसरे टीचर लग रहे थे। चलो राइट दिस डाउन, लिख लीजिए। सेक्शन 301, सेक्शन 301 requires the intention to cause death. ये मेलविल जस्टिस ने जो कहा है आर वर्सेस गोविंदा में, to distinguish between section 299 and 300, section 301 requires the intention to cause death, and 299(1) also has the same mens rea, and 299(1) also has the same mens rea. Thus there is no distinction between, thus there is no distinction between 299(1) and 301. Thus there is no distinction between 299(1) and 301. That is, if 299(1) is proved, that is, if 299(1) is proved, it will automatically result in the proof of 301. It will automatically result in proof of 301. आगे लिख लें। Intention will not be imputed. Intention, हाँ continuous, same paragraph है, पूरा same चल रहा है। Yes. Intention will not be imputed until it is proved beyond all reasonable doubt. Until it is proved beyond all reasonable doubt. Full stop. Moreover, intention under section 299(1) and 301, or 301. Moreover, intention under section 299(1) or 301 have to be examined in reference to the causation of death. In reference to the causation of death. Full stop. Next paragraph. If the intention to cause death
if the intention to cause death, ब्रैकेट में लिखिएगा डायरेक्ट डेथ, if the intention to cause death, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट डेथ, is not proved, and the death has been caused by some bodily injury, then section 299(2), and thereupon section 302 or 3 would be examined. Next paragraph में लिखिए, for 299(2), when I say 2 ब्रैकेट में, for 299(2), the intention of the accused shall be to cause bodily injury, which was actually found on the victim, full stop. Here the intention, that is the desire, intention मतलब desire है, सामने वाले को ऐसी चोट पहुंचानी है. Here the intention, that is the desire, need not be related to causation of direct death, rather only to cause bodily injury, full stop. If ये सेम में कंटिन्यू करेंगे, सेम पैराग्राफ में, if such intention is proved, मतलब 292 को अगर प्रूव किया जा चुका है, if such intention is proved, then there has to be an objective test, if such intention is proved, then there has to be an objective test whether the bodily injury caused is likely to cause death. मतलब इंटेंशन शो हो रहा है, ठीक. अब क्या इससे डेथ भी हो सकती है, ठीक. इंटेंशनली सामने वाले ने मारा, क्या इससे व्यक्ति मर सकता था, ठीक. अब भाई इंटेंशन तो सामने वाले का जान से मारने का था, लेकिन मार रहा है सामने वाले व्यक्ति को तकिए से, ठीक. तो इंटेंट टू किल तो है, लेकिन क्या एक्ट एक्चुअली वो रिजल्ट ला सकता है जैसा मेरा इंटेंट शो कर रहा है, ठीक. फुल स्टॉप. फॉर दिस पर्पस द एक्चुअल नेचर ऑफ द इंजरी, सेम में कंटिन्यू करेंगे. फॉर दिस पर्पस the actual nature of the injury has to be examined, and thereupon medical opinion shall be sought out to find out if it is likely to cause death. मतलब अगर इंटेंशन दिख गया तो नेचर ऑफ इंजरी से पता करने की कोशिश की जाएगी कि क्या इससे एक्चुअली मृत्यु हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, ठीक. बाकी की जो नोट मेकिंग है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज वैसे हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी लिखा क्या वो समझ में आया, प्लीज फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए. 7 पेजेस. सर इट इज एक्चुअली टफ टू फ्रेम आंसर्स लाइक दिस, इसीलिए तो मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग फ्रेम नहीं कर पाओगे. जब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. उनको ये तो मालूम है कि 299 में है, 300 में, फ्रेम कैसे करना है, वो मैं पूरी फ्रेमिंग आप लोगों की करवा दे रहा हूँ, ठीक. इसीलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपकी फ्रेमिंग सेट हो कि 299 इंटेंशन नॉलेज, ठीक है. इंटेंशन नॉलेज एक बार हो गया, पनिशमेंट के बाद फिर अगले पेज पे, ठीक. दिस इज हाउ इट वर्क्स. एक्सप्लेनेशन निर्भय टेलीग्राम पे भेज दे प्लीज टेलीग्राम पे भेज. ओके. फैक्चुअल में भी ऐसे ही लिखना है. फैक्चुअल में थोड़ा सा अलग चलता है भूमिका, क्योंकि होता क्या है जब हम अपन फैक्चुअल आंसर लिखते हैं तो फैक्चुअल के टाइम पे आपको फैक्ट से रिलेटेड पहले हल्का सा जिस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आप टॉपिक पे चलते हो, या फिर आप टॉपिक को शॉर्ट में एक्सप्लेन करके फिर फैक्ट को डिस्कस करके फिर कंक्लूजन करते हो. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑब्वियसली, ठीक. अगर आप लोग दिल्ली वाले मीटअप में आ रहे हो तो उसमें आ जाओगे तो फैक्चुअल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है वहां पे मैं वो और इलैबोरेटेड अच्छे तरीके से बताऊंगा.
ठीक, सो इफ यू गाइस वांट टू जॉइन यू कैन कम. अच्छा, जितने भी लोग डेली विजिट में आ रहे हैं चाहे नहीं भी आ रहे हैं, काइंडली प्रमोट इट, प्रमोट कर दो डेली विजिट को कि 30 अक्टूबर को ऐसा कुछ हो रहा है. लिंक आप लोगों को वैसे भी मिली हुई है टेलीग्राम पे, तो वो जरूर शेयर करें. ठीक, चलिए. दोस्तों मेरा टेलीग्राम हैंडल इज @darshmupadhyay_unacademy. ठीक है, दर्शमुपाध्याय डालोगे तो भी आ जाएगा. चलो, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर. आज के लिए समाप्त करते हैं. ठीक है, सर आपको इंस्टा पर टैग भी कर दें. हाँ, टैग कर सकते हो. अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, यू कैन टैग मी ऑन इंस्टाग्राम अलोंग विद द लिंक एंड एवरीथिंग. फील फ्री. ठीक, चलो, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर. आज के लिए समाप्त करते हैं. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड व्हाट, जय. ठीक है, बाय.
आराम से लेट जाओगी।